Problem number 2.27. Estimate the average mass density of a sodium atom assuming its size to be about 2.5 Armstrong. Use the known values of Avogadro's number and the atomic mass of sodium. Compare it with the mass density of sodium in its crystalline phase, that is 970 kg meter cube. Are the two density of same order of magnitude? If so, why? तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे क्या गिवन है? साइज ऑफ सोडियम एटम. सो लेट दिस इज माई सोडियम एटम with nucleus. So sodium Na. So its size हमें given है, it's about 2.5 Armstrong. So first our radius comes out to be 2.5 divided by 2 Armstrong. It will be our radius. So start करते हैं. So the radius, let it be denoted by R of sodium, is equal to 2.5 Armstrong divided by 2. It's come to be 1.25 Armstrong. So अब Armstrong को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. So 1.25 into 10 raised to power minus 10 meter. So our radius comes in meter. So volume of atom having radius 1.25 into 10 raised to power minus 10 meter became 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3 into 3.14 into 1.25 into 10 raised to power minus 10 raised to power 3 meter cube. So after calculation it comes out to 8.18 into 10 raised to power minus 30 meter cube. Now we also know that 1 mole so 1 mole means हमें मालूम है कि सोडियम का वेट मास ऑफ सोडियम इन 1 मोल 23 ग्राम और numbers in 23 gram 23 into 10 raised to power वन मोल 23 ग्राम और ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं केजीज में. सो 23 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 kg of sodium contains atoms equal to Avogadro's number. Which is 6.022 into 10 raised to power 23. So अब हमें मालूम है कि सोडियम के 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स कंबाइंड होके वेट बना रहे हैं 23 ग्राम्स और 23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 kg. सो नाउ एवरेज मास of one sodium an atom will be so m 23 into 10 raised to power minus 3, it will be in kg, and total numbers 6.022 into 10 raised to power 23, so it became 3.82 into 10 raised to power minus 26 kg. सो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, हमने मास निकाल लिया ऑफ वन सोडियम एटम. सो डेंसिटी of atom
sodium atom is equal to, we know that mass upon volume. So mass 3.82 into 10 raised to power minus 26 kg, and volume our 8.18 into 10 raised to power minus 30 meter cube. So after calculation it comes out to be 4.67 into 10 raised to power 3 kg meter inverse cube. दिस इज आवर डेंसिटी. सो उसने कंपेयर करने को क्या कहा गया है मेरे से कि एटम डेंसिटी विद क्रिस्टलाइन डेंसिटी. सो फर्दर मैं लिख सकता हूँ माई एटम डेंसिटी विल बी 4670 kg मीटर इनवर्स क्यूब. सो हमें डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन फेस में दी हुई है इज इक्वल टू 970 kg meter cube inverse. So you can easily see that these both densities are not, these two densities are not of the same order of magnitude.